Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's session, we are going to learn the chapter Mithu or Kora, which is from grade 2 textbook Gunjan. Let's start. First of all, we will start from Charcha Kare. Charcha Kare meaning let's discuss. The meaning of Charcha is discuss and Kare is let's. So, let's discuss. तोता क्या खाना पसंद करता है? तोता तोता मीन्स पैरट. क्या मीन्स वॉट? खाना पसंद करता है. लाइक्स टू ईट. सो वॉट अ पैरट लाइक्स टू ईट. तोते को सब किस नाम से बुलाते हैं? वॉट नेम डू ऑल? ऑल इन द सेंस पीपल generally call a parrot, or we can say what is the pet or what is the common name of a parrot. कौवे और तोते की पहचान कैसे करोगे? कौवा, कौवा इज crow. तोता means parrot. So how will you differentiate or how will you identify a parrot and a crow? Next, पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं. पक्षी मीन्स बर्ड. आपस में मीन्स टुगेदर. मिलजुल कर इज ऑल्सो काइंड ऑफ टुगेदर. रहते हैं लिव. Means birds also live in harmony with each other. So मिलजुल कर you can say kind of harmony or cooperation. So let me repeat. पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं. Birds also live in harmony with each other. और अच्छे दोस्त बन जाते हैं and they become good friends. अच्छे means good, दोस्त means friends. बन जाते हैं they become. वे भी मुश्किल पड़ने पर सूझबूझ से काम करते हैं. मुश्किल मीन्स एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. सूझबूझ से काम करते हैं. सूझबूझ मीन्स वाइजली. ओके, एंड काम करते हैं मीन्स दे वर्क. सो व्हेन दे गेट इनटू एनी ट्रबल और इनटू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन दे वर्क वाइजली. लेट्स रिकॉल. पक्षी भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं. बर्ड्स ऑल्सो लिव इन हार्मनी विद ईच अदर. दैट मीन्स दे को एग्जिस्ट पीसफुली एंड इन अ बैलेंस्ड वे. और अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड बिकम गुड फ्रेंड्स. वे भी मुश्किल पड़ने पर मीन्स इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन सूझबूझ से काम करते हैं. दे वर्क वाइजली. दे एक्ट वाइजली in even difficult situation. Now let's start the chapter. मीठू एक सुंदर तोता था. मीठू was a beautiful parrot. Do you know what is a common name of a parrot? Generally people call a parrot by the name Meethu. Meethu because it's very cute and it is in the habit of repeating the words what we say or what others say. So that is the reason parrot is liked by the people. Next line. गांव means village में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था. बहुत बड़ा means very big. पीपल का पेड़. People is the meaning of people is ficus. Ficus. So people basically it's a very big tree. And it is called in English ficus. So there was a very big ficus tree in the village. Tha means was. उसकी घनी डालियों पर. घनी means dense. डालियाँ means branches. पर मीठू ने अपना घर बनाया था. मीठू had built his house on the dense branches of that ficus tree. Uski basically this word uski is a pronoun. So this word has been used to indicate peepal tree. Okay, and what is the house of the birds? It's obvious this is nest. So basically they are telling ghar means nest. Uski घनी डालियों पर on its dense branches मीठू ने अपना घर बनाया था. मीठू had built his house means nest. एक दिन one day उड़ते उड़ते means when he was flying. Okay,
Now you can see in the rectangular boxes, these are the kind of you can say these are the thoughts or these are the words said by these two birds which have been shown in the page. Are wah means oh wow, itne rasile aam, so juicy mangoes. Itne means you can say such, exactly, you can say oh wow, such juicy mangoes. Rasile means juicy. Ras, the meaning of ras is juice, and rasile means juicy, aam means mango. क्यों ना इन्हें खाया जाए means he thought oh wow, such juicy mangoes, क्यों ना इन्हें खाया जाए, why he should not eat them. Next, right side of the page. मीठू ने आम के पेड़ पर बैठने की बहुत कोशिश की. This word पर is a preposition which is indicating about the means where. So on the mango tree. The meaning of this word par is on. बैठने की means to sit. बहुत means very. कोशिश means try, and की is the past tense means tried. So मीठू tried a lot means मीठू ने आम के पेड़ पर, मीठू on the tree of the mango. बैठने की means to sit, बहुत कोशिश की. Tried a lot, he tried a lot to sit on the mango tree. Now you can see 3 dots are there, means they are telling what happened after that. कोई की means crow. Tikhi we can say something, basically tikhi they have used for the sound. Tikhi avaz means sound, and tikhi means something which is not pleasing to the ears. So we can say shrill or piercing sound means which goes into our ear and we don't like, okay? Or you can say harsh, harsh. In the simple language we can say harsh, or otherwise shrill, shrill. आवाज सुनकर means when he heard the sound. What kind of sound? Harsh sound of the crow. वह डर गया. This word वह has been used for the मीठू, parrot. Okay, डर गया means got scared, means he got scared when he heard the harsh sound of crow. Now you can see in the rectangular box, these are the dialogues of these are the words said by the crow. Cow. You know what is the meaning of cow? This is the sound. This is the sound of the crow, like how crow speaks or how it talks. Cow. यह मेरा पेड़ है. यह means this. मेरा means my. पेड़ है. है means is. This is my tree. मेरा नाम कौरा है. My name is कौरा. तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम means you, YOU. यहाँ means here, HERE. क्यों आए हो? Why? आए हो means have come, means why have you come here, or why did you come here? Kora is asking, cow, this is my tree. My name is Kora. Why did you come here? Then you can see at the bottom of the page, again he is saying, cow, तुम यहाँ से चले जाओ. Means you go from here. चले जाओ means you go. Means he is telling to leave the place. He is telling to leave the place. How he is saying, तुम यहाँ से चले जाओ. You go from here. यह पेड़ मेरा है. This tree is mine, or this is my tree. ये आम भी मेरे हैं. ये, the word you can see ये, this is for plural, like these, THESE, these. आम भी, आम means again mango, भी, they have used word भी means also. मेरे हैं, mine means these mangoes are also mine. Next page. मीठू उड़कर दूर चला जाता है. Means the मीठू flies. उड़कर, the meaning of उड़ना is fly, FLY. उड़कर means he flies from there.
दूर मीन्स फार, चला जाता है मीन्स गोज, मीन्स ही फ्लाइज एंड ही गोज फार। रास्ते में, रास्ता मीन्स वे, WAY। सो रास्ते में मीन्स व्हेन ही वाज फ्लाइंग ऑन द वे, रास्ते में मीन्स ऑन द वे। मैदान में, इन अ ग्राउंड, मैदान मीन्स ग्राउंड। एक गुब्बारा, गुब्बारा इज बलून। देख कर मीन्स ही फाइंड्स, मतलब ही लुक्स एट दैट बलून, कुछ सोचता है, ही थिंक्स समथिंग, और नीचे आ जाता है एंड ही कम्स डाउन। तो व्हेन द कोरा tells him to leave the place, then he flies and he goes far. And when he was flying, then on a ground, he finds a balloon, okay, and then he thinks. Now you can see these are the words said by the मीठू। सोच रहा हूँ, सोचना मीन्स थिंक, रहा हूँ इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मीन्स थिंकिंग। तो आई एम थिंकिंग, क्यों ना यह गुब्बारा उठा लूं, Why don't I pick up this balloon? क्यों ना मीन्स why not? उठाना मीन्स pick। कोरा इसे देखकर खुश होगा मीन्स when the Kora would see this, he would be happy. Okay, so Kora इसे देखकर खुश होगा, Kora would be happy to see this. See, he's so kind of generous. In the beginning we say na ki like they live peacefully with each other, they live with a harmony. Okay, so this is the example. He found a balloon and then he's thinking about Kora. Why should I not pick up this balloon? And Kora would be happy to see this. So now you can see down, मीठू गुब्बारा मुंह में दबाए कोरा के पास दोबारा आता है। मुंह मीन्स माउथ, में दबाए। The meaning of dabana is basically to press something, but here you can say कि like he holds the balloon in his mouth and कोरा के पास दोबारा आता है। दोबारा मीन्स अगेन, आता है मीन्स कम्स, कोरा के पास मीन्स टू कोरा। सो मीठू कम्स बैक टू कोरा with the balloon in his mouth. Meethu comes back to Kora with the balloon in his mouth. Next, now the Kora is asking, काऊ यह कौन सा फल है? काऊ which fruit is this? कौन सा means which, फल means fruit, है means is. So he is asking, which fruit is this? तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? तुम मीन्स यू, मुझे मीन्स टू मी, भी मीन्स ऑल्सो, खाने के लिए मीन्स टू ईट। दोगे इज अ क्वेश्चन वर्ड, विल गिव। सो व्हाट ही इज आस्किंग, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? विल यू गिव मी सम टू ईट टू? TOO, ओके। सो काऊ ये कौन सा फल है? विच फ्रूट इज दिस? तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे? विल यू गिव सम टू ईट टू मी एज वेल? नेक्स्ट, नाउ मीठू इज रिप्लाइंग, यह गुब्बारा है, दिस इज अ बलून, एक खिलौना, अ टॉय, खिलौना मीन्स टॉय, तो यह एक गुब्बारा है, दिस इज अ बलून, एक खिलौना, अ टॉय, इससे खेलते हैं मीन्स इट इज यूज्ड टू प्ले, इससे खेलते हैं मीन्स इट इज यूज्ड टू प्ले। तुम मेरे साथ खेलोगे? विल यू प्ले विद मी? तुम मीन्स यू, मेरे साथ मीन्स विद मी, खेलोगे इज अगेन अ क्वेश्चन वर्ड, विल प्ले, सो तुम मेरे साथ खेलोगे, विल यू प्ले विद मी? हाउ मीठू रिप्लाइड? मीठू रिप्लाइड, यह गुब्बारा है, दिस इज बलून, एक खिलौना मीन्स अ टॉय, इससे खेलते हैं, दिस इज यूज्ड टू प्ले, तुम मेरे साथ खेलोगे? विल यू प्ले विद मी? नेक्स्ट, दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। दोनों मिलकर मीन्स दे बोथ टुगेदर, दोनों मीन्स बोथ, गुब्बारे से मीन्स विद द बलून, खेलते हैं मीन्स प्ले, दे बोथ प्ले विद बलून टुगेदर। अचानक मीन्स सडनली, गुब्बारा फट
जाता है मीन्स सडनली द बलून बर्स्ट्स, फट जाता है मीन्स bursts, bursts. And you can see in the circle there is the sound, okay, although we cannot see the sound, but they have written here two words, phatak, phatak. Oh, what sound is this? So this is the balloon bursting sound, phatak, phatak. Immediately Cora gets scared. भागो भागो, run run. लगता है मीन्स इट सीम्स, कोई मीन्स एनी, शिकारी इज हंटर, आया है मीन्स केम और हैज कम. As the balloon bursts, immediately Cora gets scared and then he starts saying, भागो भागो, run, लगता है, it seems, कोई शिकारी आया है, it seems to be hunter here. Now next page. डरकर means in fear. कोहरा मीठू से चिपक जाता है, चिपकना. The meaning of चिपकना is basically cling, CLING. So you can use here the word cling also, or you can say the word hug also. So चिपक जाता है means कोहरा hugs मीठू in fear. In fear means डरकर, in fear means डरकर. So डरकर कोहरा मीठू से चिपक जाता है, इन फियर कोहरा हग्स मीठू. नाउ मीठू कोहरा को प्यार से समझाता है, मीन्स समझना मीन्स टू अंडरस्टैंड, एंड समझाना मीन्स टू मेक somebody understand. So I hope the difference is clear. So similarly मीठू कोहरा को प्यार से means lovingly, okay, or with love or politely. So मीठू explains to Cora lovingly. Now just see in the rectangular box, डरो मत means don't get scared. दोस्त, friend means don't get scared friend. यह गुब्बारा फूटने की आवाज़ थी means it was the sound. फूटने की means bursting किसकी, like whose, gubbara, balloon. So it was the sound of a balloon bursting. Okay, so now again, डरो मत दोस्त, my dear friend या my friend, don't get scared. यह गुब्बारा फूटने की आवाज़ थी. It was the sound of a balloon bursting. Okay, means when a balloon bursts, this kind of sound comes. Now Cora, he is laughing. Okay, you can say ha ha ha. So this is, we can say, kind of the sound when somebody laughs. मैं तो डर ही गया था means डरना means to get scared. मैं तो means I. तो ही, you can say the meaning of तो ही is actually really. So he is saying, oh, I got really scared. मैं तो डर ही गया था. I got really scared. So now they both understand, and you can see at the left hand side down one, दोनों खूब हंसते हैं. खूब means a lot. हंसते हैं means laugh. दोनों means both. So both of them laugh a lot. Now Cora मीठू को अपने पास बुलाता है. बुलाता है means calls. अपने पास means to him. तो Cora calls मीठू. आओ मेरे दोस्त. Come my friend. आओ means come. हम मिलकर आम खाएंगे. हम means we, मिलकर means together, आम means mango, and खाएंगे means will eat. So what does it mean? हम मिलकर आम खाएंगे. We will eat mangoes together. Now right side, दोनों मिलकर means both of them. मिलकर, again the meaning of मिलकर is together. आम खाते हैं. This is the basically present indefinite tense. खाते हैं means eat. So they both eat mangoes together. अब means now. दोनों means both.
अच्छे, अच्छे means good. मित्र means friend. बन गए means became. So अब दोनों अच्छे मित्र बन गए. Now they both became good friends. So Kawa is saying caw 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 and Mithu is saying te te te. Now the last one, Mithu or Kora means Mithu and Kora मिलकर means together. आम के पेड़ पर means on. So on the mango tree रहने लगे means started and रहने means living. So Mithu and Kora together they started living on the tree of the mangoes. दोनों means both. Rose means daily. मीठे means sweet. रसीले means juicy. आम खाते थे. They both used to eat sweet and juicy mangoes daily. I hope, my dear children, this chapter is clear to you. But still, if you have any doubt, you can just post your comments. Definitely, I'll reach to you and I'll try my best to make your doubts clear. So, see you soon in the next chapter. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.